Yes, ma'am. Okay. So today I am going to brief you about anthropology optional, right? So most of you, must have decided that, okay, this is an option which you people have to pick it up. I would say, fine, you take sociology, you take anthropology, take any discipline, take any optional. You know, there is something which is very important, and that is what I am today going to reflect that plays a significant role. Okay, I'm not here just to promote, you just simply take anthropology or take sociology. I'm just going to start that how once you have decided that okay, you have taken anthropology, now you should be knowing that this is not a place where we are going to get a degree. It is highly competitive exam. ठीक है तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन भी हमको वैसे ही करनी है. Now, if I'll say every discipline has some philosophy, has some core theme. Okay, anthropology का जो core theme है, I would say I will help you to understand it with contemporary relevance. ठीक है? Why am I doing this? I'm doing this just to understand कि रटने से कुछ नहीं होगा. We do not have to do rote learning because nowadays you would see the content is available on AI tool. YouTubers are there, teachers are there, even I myself are there, right? Fine, you can see a lot of videos of mine, but that is not something you people have to go for it, okay? So I would now, because purposefully, I am making this class, just a moment. Purposefully, I have made this class live. I am on YouTube, okay? Because I know that most of the students who take anthropology or sociology or any other discipline, they're not very clear. Okay. So I am just trying to help not only my classroom students who are there, who are here with me, but those who are taking YouTube classes. Please understand, it is not about the content. I can give you a guarantee with average content also. With average content also, if you know the articulation, if you know how to frame your answers, if you know the proper answer, I think you will get this exam clear. One of my students who is now an officer, he's a revenue officer now, he just approached me 2 months back. Like 2 months पहले उन्होंने मुझे approach किया था last year. Okay, and then he cleared it because he did not study at that point of time with me, from me. ठीक है तो उन्होंने पहले कहीं पढ़ा था कहीं और से आजकल प्रॉब्लम यही है कि सब कुछ है अवेलेबल. When he came, I just told कि अब टाइम नहीं है तुम्हारा पास सिर्फ 2 महीने है, do the needful. यही स्ट्रैटेजी की शुरुआत आपको आज से ही करनी है. Tips and strategies are more important in anthropology. Now, let me bring my first question. What is the philosophy of anthropology? I will explain it with the current situation. Now, I will explain this with international relations. Please don't mind my writing. I'm quickly writing it. So doctorate की writing जैसे जैसा हो रहा है. Okay, this is international relations. Contemporary scenario. Are we witnessing wars? My student, Godaldi. All my classroom students will answer. Are you witnessing something in today's time? What is happening? Talk me with respect to wars. What is happening? Budari, can you just tell me, are we witnessing wars in today's Yes, ma'am. Tell me some facts. Do not expect that I would be teaching in this manner, Budari. You know me. We had a word. I'm not going to just simply give you everything on your plate. I will ask. Class will be interactive. Class will be this interactive. Tell me, what are you witnessing in today's time in terms of wars? Wars between USA, Israel, and Iran. And Okay. recently there Okay. is Okay. a Okay. So can I call USA or Israel, right, as dominant power? I can give lot of names, right? Dominant power. I can call Europe, this and that. Can I call? Right? They are attacking
Middle East, Mm. right? Now, one of the aspects is oil. Now, just tell me, is it serving to humanity? Is it bringing prosperity to the No, world? ma'am. No, ma'am. Not at all. Not at all. Even today, we are in new colonial phase. Even today, we are at risk. Humanity is at risk. So we are behaving just like animals. But the point here is, anthropology is telling that all of us, we have evolved from single cell. And then later on, we have become complex or multicellular organism. तो जर्नी है प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक तक. इस बीच में if I'll talk about geological time scale, Azoic period and this and that, today we are in Holocene period. Today we have become Homo sapiens sapiens. What make me different from other living organisms? My critical thinking abilities. My abilities to question, my abilities to have society, to have coexistence. Isn't it? Right? So why are we having wars right now? If we have evolved that much, we have brought science and technology. We do have so-called, human rights norms. We have international bodies after Second World War. Why are we witnessing the same wars? Now the question coming, please mute yourself, Pudari. Now the answer is, which UPSC did ask in one of the state exams. If I'm not wrong, in Chhattisgarh. The concept of ethnocentrism. यूपीएससी ने प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज एथनोसेंट्रिज्म? तो एथनोसेंट्रिज्म is a belief, it's a feeling of superiority. So today's, just a moment, I do have some students to join. So let's come back to the same question. Ethnocentrism is the feeling of superiority. So US or Israel, or UK, or I would say Europe-centric countries, they had a belief, that they are superior race. They are the Caucasoid race, if I'll talk about more detail, that you would be reading in your race and racism, right? So race and racism is the topic 9.5 in anthropology. Is race a biological concept or it's a social concept? Definitely, race is a biological concept that you have to see. It is being explained by Dobzhansky. Racism is a social concept where I am putting somebody down because of its race, because of its phenotype, the way they are looking at. Now the world in previously also has given this form of destruction, and today we are having same point. So this war, which is continuation of what had happened previously. If you do remember your history, Treaty of Tordesillas. Treaty of Tordesillas signed between Spain and Portugal, right? Where these people have decided somehow they are civilized and rest of the world are uncivilized. Who gives us this authority to call people as uncivilized if they do not have materialistic, things around us? If people are living in forest, you are the one who are taking their land and calling them savage. It's not making sense to LP Vidyarthi, Indian anthropologists. It is not making sense to various anthropologists, to Malinowski, Cliff Brown, to Burnett Taylor. They all are asking significant questions. Why are we having this discrimination when we all have evolved from primates? We do have a common ancestry. We do have Hardy-Weinberg law, which is telling about population evolution. Now, anthropology, if I'll define, is in the service to humanity. Because anthropology is helping us
to remove this, ego. It is telling that this world is a beautiful place. We can have coexistence, right? We can have peaceful coexistence. We can live together. Why are we fighting over resources? The problem is human greed. So these people are fighting. If I'll put in Karl Marx's perspective, Karl Marx is saying that dominating power wants to control the economic resources so that they can exploit. So UPSC did various time ask question in anthropology, that anthropology is in the service of humanity. If they will ask me again, question on anthropology, topic 1, meaning, scope and development of anthropology, I'll straight away show my critical engagement. I'll straight away bring the war situation and then I will connect it to the anthropology. This is what you will have to learn. Is it clear? Kavya, you people, you are late. Do not come in the late. Like, don't come late in the class, okay? This is first orientation class. Now I'm just trying to explain how you people have to, understand. So few classes, I'm not just going to explain the concepts to you like this. I will explain the entire syllabus. Anthropology is the unique discipline. Please mind this. It is bridging a gap between natural sciences and social sciences. Not at all you're only going to see biology or science. It is social science. And nowadays, question which is coming in anthropology is more from social cultural part, that is sociology. Is this clear? So what have I done? What have I done? I've just tried to explain anthropology in a very unique manner. Okay? So this is how we need to understand. The race, the competition is among even those who might be a doctorate in anthropology. What you will do then? But I can give you assurance that even the doctorate in anthropology or sociology, if they do not know the answer writing skills, they would be on the same line. Okay, one of my students in anthropology, she scored around 280 something. She was herself a scholar in JNU, right? But she got 280, and there were students who got more than her. The point here is कि आपको strategize करके पढ़ना है ये syllabus, right? Now I would just tell little bit on this. Once you have chosen it, fine. I would just going to tell why it is best optional and all that. That I'm going to skip right now. Okay. I would say that very soon, when I will going to give you orientation. देखो, anthropology का orientation syllabus को समझना, it's very important. Unlike any other discipline, you will see the syllabus, the way it is being constructed by UPSC, it's unique. It has 1.1, 1.2, 1.3. Then it is about human evolution. Okay. Then it is about primates. Then it is about fossil evidences. Then it is about 1.8. That is archaeology, cultural evolution. Then you will come to 2.1. That is ethnocentrism, which I have just taught you. Ethnocentrism, culture, civilization, society. Then it will talk about social stratification, inequalities. Then you will talk about marriage, family, kinship. Then you would talk about economic anthropology, political anthropology, then religion, then anthropological theories, then culture, language, right? Then what will happen? The moment you have covered 7 and 8, that is research, you will have human genetics, right? Then you would be talking about pedigree analysis, foster child, is it nature nurture debate, then Mendelian chromosomal abbreviations. Then you will come 9.5, race or racism. Then 9.6, genetical markers, right? Genetic markers, 9.6 you will study. Then 7, ecological anthropology, epidemiological anthropology. Then you will talk about human growth and development. Then you will talk about menstruation, menarche, fertility. Then applied anthropology. And then if you will see paper 2, it is about cultural evolution in Indian context, fossil in Indian context, and everything rest is sociology.
such a marvelous syllabus, I would say. It needs to be decoded. अगर हमको इसमें अच्छे मार्क्स के साथ और फुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ खत्म करना है, so we need to divide the syllabus into 4 branches. मेरा पर्सनल कुछ स्ट्रैटेजी है which I follow, right? I divide into branches: biological anthropology, sociology, neutral, fundamental. Okay? And I make relations out of it. Fine. So it is very important for all of us to know the syllabus. Now, how I am going to teach to all of you? I will start with SERT. Now, those who are watching me online, YouTube mein, right? And even my students, like classroom students, please download this book, Kerala Board, Anthropology, class 11th and 12th. Meaning, scope and development of anthropology. You people can start reading it. Okay? Then there is a biological, social, cultural part and all. I would not suggest to buy any content from the market because I would be giving you my books. I would be giving you my content. Okay, my PPTs. And more, सबसे ज़्यादा important, the way what I am speaking. I can give you in writing. You meet any of my students. किसी भी batch के students से आप मिल लो, randomly मिल लो. See your notes and see that student notes. कभी भी आपको कुछ similarity मिल ही नहीं पाएगी. You know, so often market strategists come to me and they say कि मैडम अपने notes market में रख दो and all that. तो rectification करके doctorate की degree हासिल नहीं करी है भाई. Yes, I did prepare for civil services, but just to know that why people are preparing for civil services and to generate that intellectual curiosity while I was in JNU, I prepared for it and with full heart I prepared for it. But always I wanted to become a passionate teacher. I left Jamia University की job. I was there. I would have been like, you know, अब तक तो associate professor बन चुकी होती. I am highly passionate teacher. I'm not boasting myself, right? What I'm saying, please understand, जितना passion आप लोगों को IAS बनने के लिए है, उतना ही passion मुझे भी पढ़ाने के लिए. ऐसा नहीं था कि मैं officer बन गई, अब मुझे market में उतरना है तो मैं business करने लग गई, या फिर मेरा civil services clear नहीं हुआ तो मैं teacher बन गई. कोई competitive exam की तैयारी कभी नहीं करी है. In fact, मेरे को जामिया से भी काफी ऑफर था. और you know, when I was teaching in जामिया के स्टूडेंट्स को, UPSC सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स को, I left it and I become a part of coaching industry. Okay, so you need to see your passion. तो अगर passion होगा ना, तो आप लोग कहीं से भी फूल नहीं बनोगे, कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा आपको, right? So we need to understand that we are preparing for such a difficult exam. We can't just let it be. We can't just simply say कि ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है. भाई, आपको खुद की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ना. Nobody would say class 11th and 12th की बुक पढ़ो. When I entered this industry, मैंने करोल बाग की जो ये मार्केट होती है वहां पे ये बुक्स रखवाना शुरू किया. I was the first one. I am the pioneer who had made videos on class 11th and 12th SCRT and thinking कि direct questions है इसमें से, what these people are doing. Such a relevant book. Okay, please read class 11th and 12th. Yes, I would be reading it. I would be giving my notes. My classroom students do not have to make any notes, just reading. I would be providing content. Okay, so pehla the point 11th and 12th. Now, I would say all of you, just a moment. As I said, ये वाला point पहले मैंने आप लोगों को clear किया है. Do have a conceptual clarity, right? Now let's have a test. Right now, I have explained anthropology to you. I am giving you 4 minutes or 5 minutes if you people want to take. Take it and define anthropology. The way I have explained. यहाँ पे कोई lecture नहीं चल रहा है. यहाँ पे कोई YouTube, मतलब don't take me like ना YouTuber. मैं आ गई और मैं आपको लेक्चर देती रहूं और आप बड़े इंप्रेस हो जाओ, वाह 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 मैडम बड़ा अच्छा पढ़ा रही है, पीछे से म्यूजिक चल रहा है. I have to do it. I have to adapt. Otherwise, I will be out of the market. Otherwise, trust me,
4 years बैक 5 years बैक मुझसे हंसा नहीं जाता था बच्चों को पढ़ाते वक्त, तो इतना प्रेशर है. एनी हाउ विल गेट बैक टू दिस, बहुत डिस्कशन होता रहेगा. राइट नाउ प्लीज डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, राइट इट डाउन द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट हाउ इज इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी. डोंट प्लीज डू नॉट थिंक के कंटेंट तो आता नहीं है, मैडम ने पढ़ाया तो है नहीं, अब कैसे हम लिख ले. यही तो समझना है, कंटेंट की जरूरत नहीं है. मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि एक्सप्लेन करो व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी. आई एम एक्सप्लेनिंग एंथ्रोपोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड एंड इट इज हेल्पिंग समथिंग ऑन ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी को कीवर्ड बनाओ. एंथ्रोपोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है. राइट 2 लाइन्स फॉर मी. Yes. Yes, Gurari. Kavya, please tell me. Anthropology is a science that helps to understand the evolution of human beings by finding its relevance in various aspects of human life. So, do you think that you are fulfilling the demand of the question which I have given? No, ma'am. Very innocently, you are saying no, ma'am. So now define it. Define it. कुछ ना समझ में आए तो पैराफ्रेज कर दो. Indeed, anthropology is promoting humanity by killing ethnocentrism, by promoting diversity, by telling that we can coexist. Now, the answer which you have given and the answer which I am telling, there is a lot of difference. The answer which you have given, it sounds academic, boring. What you have understood, competition बहुत है. समझ में आया? Godari. Yes, ma'am. Write it down. Are you upset? No, ma'am. Smile little bit. Use your camera. Switch on your camera. I want to see you.
Okay, don't. Class is live. Leave it. Kavya, you tell me. Am I audible? Am I audible or not? Okay, Gudari, please write down. Everyone, please write down. Indeed, anthropology is in service to humanity, promoting coexistence, destroying ethnocentrism, destroying ethnocentrism, destroying ethnocentrism by pleading for cultural relativism, full stop. In other words, anthropology is a scientific discipline that helps humans to have comprehensive, critical understanding towards peaceful coexistence. Written? Everyone? Budari, have you written, Bita? Kavya? All students? Yes, ma'am. Deepu? The idea is that not to, like, tell you in my just first day class or, orientation classes that this is like, you people have to study. No, idea is not that. Idea is just please understand how you people will deal with this topic. Okay? So first of all, we need to have a conceptual clarity the way I have just given you a little glimpse. Okay? Now, you need to see, I would say we must have proper guidance. Okay? So that's what I am here for. Now, one thing is there, I personally want my students to follow corner note making method. Okay, what is corner note making method? That I will explain later on. Please just write down corner note making method. Okay. Now, this is my syllabus, but I will just explain it differently. Just a moment. Too many. We will can make heading little bit. अभी सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा syllabus discussion कर रही हूँ मैं. Okay. ओके तो न्यूट्रल टॉपिक पे आपका पहला टॉपिक है 1.1, 1.2,
1.3 of paper 1. Here we are going to discuss meaning, scope and development of anthropology. I am going to explain the meaning of anthropology by, I would say, minimum by 70 to 60 ways. इतना यूनिक डिसिप्लिन है ये कि कितनी ही तरीकों से आप एंथ्रोपोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकते हो. What is the scope of anthropology? Vast. Okay, because it is a study of mankind. So, it is a study of the journey of men since we have got the earth. 4.6 billion years ago, जो कहानी start हुई थी, we have got our earth and other planets, and then how we have got the life forms, everything is there. Everything is there. Okay, so it is such a unique discipline that you will see how it is helping us to understand, right? What are we, right? I'll show you one very, like, my one of the topic. Okay, let me just show you one of my more PPT. Just a moment. That is like like not. This is updated one, so I've just got it. But I like that one orientation PPT also. So I will just show you. It is very interesting. I will share both PPTs to all of you. Okay, don't worry. Okay, now can you just see this? Very interesting PPT, right? So you can see that they are not having any cultural demarcation. Okay, so they do have only biological differences. Fine, but more or less they do not have gender on them. They have sexual categories, they do have sexual organs differently, biologically they are different, but socially they are acting like same clothes they are wearing, same attitude, right? So we do have to understand biocultural evolution. We have evolved, let's just say, from Lucy, right? Australopithecus, one of the species which has the common linkages between ape and humans. And then I would say, let's just say, by Homo sapiens. Now, why I was telling that this is very interesting to know that anthropology में आप सब कुछ पढ़ोगे, but little bit, but with respect to human evolution only. ऐसा नहीं है कि I'm going to teach you astronomy. No, I'm not going to teach you astronomy. Neither I'm going to talk about biology. Most of the students coming from science background, yes, they do have an little bit edge for taking anthropology, but trust me, it is not at all biology. You may talk about DNA replication, you may talk about structure of cell, but with respect to human evolution. Now, even without having science background, you can take this discipline, or with science background, it hardly matters because I am there with you. I will explain कि किस तरीके से आपको ये ढंग से पढ़ना है, right? So कहीं कहानी यहीं पे start हुई थी. So the kind of earth which we see today, it was never like that. So I am going to even teach you that story. So the primordial condition of earth was having volcanic eruptions. There was no oxygen, ozone layer. Then how and why life came? उसका भी discussion होगा, but doesn't mean कि मैं astronomy और geology पढ़ा रही हूँ. I have to just give you a light on it, right? Now I would tell ये story start ही कहाँ से हुई? Astronomy का discussion के Big Bang theory, it started with Edwin Hubble, right? इन्होंने एक telescope, powerful telescope लिया. Then he told about the discoveries. Milky Way is not the only galaxy they are expanding, right? Then we do have George Lamartine, who has given this Big Bang theory. Yeah.
So then the formation, this and that. What I just want to tell to all of you that anthropology is a unique discipline because it is actually bringing all the disciplines together to explain human evolution, to explain the world, how humans are different. अब सुनने में ये बहुत आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट एग्जाम में जो मैं बोल रही हूँ वो तो ना लिख के आ पाओगे आप. तो नोट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने कॉर्नर नोट मेकिंग बताया. कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ एक हैंड होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग. आई चेक माय स्टूडेंट्स का कॉपीज माई सेल्फ. ओके, आई एम नॉट हैविंग के मैं 50 मतलब 200-300 बच्चों को एक साथ बैठ के पढ़ाऊं. आई जस्ट नीड स्मॉल बैच साइज सो दैट मैं उनको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं. दे वुड बी विद मी इन माय मेंटरशिप. फाइन, सो दिस इज हाउ आई हैव टू डू इट. So as I am just explaining that very interestingly, I can explain everything to all of you, right? So how to deal with this type of work? सिलेबस को किस तरीके से डिवाइड करेंगे? कुछ न्यूट्रल टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा, राइट? तो यहाँ पे हम इस तरीके का डिस्कशन करेंगे कि ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ, हम डिफरेंट क्यों हैं, हाउ वी हैव क्रिएटेड रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म इतना सुपीरियर क्यों नहीं है. We also have the ability to speak, right? So our vox, larynx, right? Broca vernic area in our brain. We do have some features in our brain responsible for communication. It doesn't mean कि मैं डॉक्टर हूँ, फिजिकल डॉक्टर की तरह मैं आपको ब्रेन बताती रहूं. हमको एक बैलेंस अप्रोच लेके रखना है. इट्स इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, राइट? So 1.1, 1.2, 1.3, I keep it as neutral topic and it is the most important topic. मैं सबसे ज्यादा टाइम इसी टॉपिक को लेती हूँ कंप्लीट करने में, ठीक है? After that, you have 1.4, very easy. UPSC is not even asking too many questions, but I am not a UPSC body. उनका मन करेगा तो वो पूछ लेंगे, अभी नहीं पूछ रहे for some years. They are not asking on Lamarckism, on Charles Darwin theory. They are not asking Gauss principle, adaptive radiation. But I am not a body. I am not a UPSC body. Think tank of our country would decide. But yes, 1.4 is a very basic biological concepts का topic जो बहुत easy है, ठीक है? उसमें आपको सिर्फ basic science चाहिए, like bio, जो कि आप class 10th में भी पढ़ चुके होंगे. Fine. तो ये topic है. Then मैं क्लब करती हूँ 1.5 को, जो कि प्राइमेट्स है, इसी टॉपिक पे. यहाँ पे हम अपने क्लोजेस्ट एंसेस्टर्स को पढ़ते हैं एंड देन 2 डायमेंशंस के साथ, हाउ बायोलॉजिकली वी आर डिफरेंट और सिमिलर, एंड देन हाउ सोशली कल्चरली वी आर डिफरेंट और सिमिलर. दैट इज 1.5, राइट? यस, वी डू हैव इवॉल्व फ्रॉम प्राइमेट्स. उसका फॉसिल एविडेंसेस हम पढ़ते हैं. This we study with respect to phylogenetic status. Okay, how we are evolving, we are trying to see the family tree. Okay, so Homo sapiens, sapiens, Cro-Magnon, right? Rhodius in man, then Neanderthal. Okay, then Homo erectus, Australopithecines, not many species. यहाँ पे I will just explain the facts. Okay, then we do have 1.6 के बाद you do have 1.7. I would put into here biological only. Yeah, just a moment. This part you can just skip it. This we can add here only. 1.5, 1.6 in archaeological anthropology. Little changes. Okay. 1.4 के बाद हम यहाँ पे 1.7 लाएंगे. That is basic structure of cell. 1.8 पेपर 1 का मैं दोबारा आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ले आऊंगी. Then you have 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4, 5, 6, and even 7, and 8 again I will here bring to the neutral topic.
इसके बाद यहाँ पे एक और टॉपिक आएगा 1.1, 1.2 एंड 1.3 ऑफ पेपर 2, क्योंकि 1.8 एंड 1.1 ऑफ पेपर 2 इज सिमिलर. डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन द सिलेबस अगेन. मैं बार बार सिलेबस का रिवीजन करती हूँ. डोंट वरी, आई नो कि इतनी जल्दी आपको ये समझ में नहीं आएगा. अभी सिर्फ ओवरव्यू एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है. तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो गया, आपका फॉसिल एविडेंसेस हो गया. अब यहाँ से जो आपका 2.1 से लेके जो आपका टॉपिक 9 है पेपर 2 का, दैट इज ऑल्सो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. So 60 to 70% syllabus is from your sociology, right? So that is your social cultural anthropology. Then here, entire 9.1 to 9.6, human genetics, I will put into biological part, right? Then here 7, 8, 9, 10, 11, 12, paper 1. This is how I will going to follow the strategy, right? तो सिलेबस डिस्कशन बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. अभी तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को डिस्कशन किया है that how we are going to see the syllabus. See, you can see social cultural anthropology I am explaining here. Meaning, scope and development of anthropology, relationship with other disciplines, the nature of culture, branches, nature of society, marriage. Okay. Then family, marriage, kinship, religion, research methods in anthropology. Then this is again application of anthropology. I have put it into social culture part. Linguistic anthropology. This is biological anthropology. Okay. I would say in my class you will find lot of emphasis on answer writing. From day 1 I will teach you answer writing skills. Okay. यही है आपका सक्सेस, मेरा सक्सेस एक ही है. ओके. आप रैंक होल्डर बनोगे, आप मेरे नाम बोलोगे, मेरी तारीफ करोगे, या अगर आपको लगा तो ठीक है, देन मैं सक्सेसफुल होंगी. एक टीचर के लिए इससे बड़ा सक्सेस कुछ होता नहीं है. बट व्हाट टू डू, राइट? इवन इफ आई बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट, टीचर का रोल को भी छोड़ भी दे, कमर्शलाइज रोल में भी आ जाऊं, तो if I'll put my 110% to your success and growth, I would be also generating wealth for me. मैं बहुत ऑनेस्टली ये बात बोल रही हूँ. ओके. I may have different intentions in my mind. ओके. तो दोनों एक साथ सिंक हो सकता है. There is nothing wrong in it. But what you have to understand, you need to follow whatsoever I am going to tell to all of you. If I am saying answer writing is possible even from the day 1, it is possible. Okay. So answer writing is only skill मुझे लगता है कि जो बच्चों को अच्छे से सीखनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में तो एग्जाम में आप वही लिखोगे ना. So you need to focus on examiner mind. Questions are reflection of examiner mind. You need to debunk the question, focus on the content, how you people have to see, right? And right answers. So there are lot many things. जनरली बच्चों को लगता है कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन ही है. बहुत कुछ है आंसर राइटिंग में. ओके. विल हैव टू गो डीपर इनटू इट. So there is a 7 C's of communication for answer writing and personality test. Okay. What is concrete? What is correct? What is complete? What is concise? Courteous. आप में और दूसरों बच्चों में डिफरेंस क्या है भाई? अभी जितने बच्चे भी मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे, ओके, या आप लोग मुझे सुनते होंगे, मैं तो सेम ही टीचर हूँ. मेरा एक ही लिमिटेशन है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन स्टूडेंट्स. आप कितनी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो. मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं मेंटरशिप के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं. एक स्टूडेंट तो लाइक पहले लाइक ऑफिसर है, वो ब्यूरोक्रेट ही है, स्टेट एग्जाम के ही है शायद, बट अब वो सिविल सर्विसेज के लिए पहली बार तैयार कर रहे हैं. He wakes up at 3 o'clock. अपने जॉब के साथ भी पढ़ाई कर रहे हैं वो. And such a good answer he is giving every day since he has joined. तो I am similar. कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उठते भी नहीं है सुबह सुबह.
3:50 पे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है। आज हमने इतना अच्छा डिस्कशन हुआ, 5:10 तक हम बैठे हुए बात कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ कि ये करना है, ये करना है। फोकस होने की जरूरत है ना। आप सोचो कि कोई ऑलरेडी सर्विस में है, किसी को ऑलरेडी स्टेबिलिटी है, बट स्टिल गोइंग फॉर सिविल सर्विसेज, दे वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। वर्थ ऑफ है, आई वुड से। लेकिन हाँ, पूरी जिंदगी नहीं बना लो। अगर नहीं क्रैक हो रहा है, इट्स ओके। सब कुछ एक डिसाइड नहीं करेगा। इतने हैं ना आज तो बाद में टीचर्स बने हुए बैठे हुए हैं, सारे ब्यूरोक्रेट ही तो है। कोई अपने, कोई आईआरएस था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, कोचिंग खोल के बैठे हैं। अलग अलग डिमांड हो सकती है। ऑल आई वांट टू से कि समझना सही तरीके से है। ओके, तो इस पे मेरा बहुत प्रिसाइज डिस्कशन चलता है। तो पहले हम आंसर राइटिंग ये करेंगे। ओके, तो भाई यूपीएससी का मेन क्वेश्चन है, आप मेन क्वेश्चन जो पीवाईक्यू से बेसिक अंडरस्टैंडिंग लोगे, एनालाइज लोगे, और टिप पे होना चाहिए आपके क्वेश्चंस, राइट? प्रीलिम्स के, मेंस के। इट्स बीन नाउ consecutively 4 to 5 years। मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ क्वेश्चन आ रहे, नॉट ओनली इन एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ऑल्सो इन एसे, इन एथिक्स, GS1। और ये कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा प्रोफेशन है, दिन रात मैं यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तो मेरे को कोई भगवान बनने की नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू पीपल जस्ट नीड टू बी कनेक्टेड विद अ पैशनेट टीचर। तो वो पैटर्न है, और इसमें बहुत बड़ी बात भी नहीं है। वाह मैंने क्वेश्चन बताया, बच्चों ने क्वेश्चन आया, म्यूजिक ऐसे का टॉपिक बताया, ऐसे में आगे, ठीक है, बच्चे रिकग्नाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वो आप भी कर सकते हो। मैंने अभी अपने कुछ स्टूडेंट्स को ये पैटर्न समझाया है। बट बात क्या है, आपके पास वो टाइम नहीं है, आप उतना रिसर्च नहीं करोगे। हम कर रहे हैं आपके लिए, आपको बता रहे हैं, राइट? बट इवन इफ आई एम डूइंग, इट्स नॉट एट ऑल अ बिग थिंग। यूट्यूब का जमाना आ चुका है, बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, कोई भी टीचर बन रहा है। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे को कोई पर्सनल जेलिसी नहीं है। इट्स ओके, करो जो करना है। मैं यहाँ पे आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। मेरा फर्स्ट ओरिएंटेशन आप लोगों के साथ है। डू नॉट प्लीज इवन थिंक फॉर अ वन दैट आई एम गोइंग टू बी अ रेगुलर टीचर। मैंने एग्जाम्स, बच्चों को क्लास से भी बाहर निकाल देती हूँ। मैंने आपको होमवर्क दिया, आपने होमवर्क नहीं किया, मैं आपको आपका रिफंड कर दूंगी। मत बैठो क्लास में। I am also having a responsibility that I am going to shape up IAS officers. That is my take, that is my contribution, right? तो आज की क्लास में ये सब डिस्कशन हो रहा है सो दैट आप लोग ये समझो, आने वाली क्लासेस में आपको इतना ही सीरियस होना है। एक क्लास मिस नहीं कर सकते विदाउट इन्फॉर्मिंग मी। मेल करोगे, राइट? मेल एड्रेस मेरे असिस्टेंट या एडमिन टीम आप लोगों को दे देंगे। बहुत ज्यादा फोकस करना है हमने डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस में। ये एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन में आप लोगों को ये एक्सप्लेन समझ में आ जाएगा। इसके लिए पूरी क्लासेस चलेगी, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, पुडारी एंड ऑल, राइट? आंसर राइटिंग की वो आप लोग इस पे कैच करोगे, ठीक है? तो here I just wanted to explain that once we are when we are reading about anthropology, right, we need to look into the various dimensions। बहुत सारे डायमेंशंस को हमको टच करना है, बहुत सारे डायमेंशंस को। और ऐसी मेहनत करनी है, एक ही बारी में एग्जाम क्रैक करना बहुत पॉसिबल है भाई, बहुत पॉसिबल है। आप प्रीलिम्स को थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करो, मेंस माय गारंटीड, मेरी गारंटी है मेंस में आपका आंसर राइटिंग, आपका सारी चीजें आई विल प्रोवाइड। मैं ओपनली यूट्यूब में बोल रही हूँ। अगर आपको लगे ना हाँ हुमा मैम ने हेल्प नहीं करी, हुमा मैम को हमने ऐसे दिया, उन्होंने हेल्प नहीं करा, या एथिक्स दिया उनको आंसर राइटिंग, ऐसे नहीं होगा। इट जस्ट की थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने कोई एआई टूल नहीं हायर किया हुआ औरों की तरह, राइट? और मैं अपने असिस्टेंट को नहीं बोलती कॉपी चेक कर दो, टाइम जरूर ले लेती हूँ लेकिन कॉपी मैं ही चेक करती हूँ। ओके, सो मेक श्योर कि आपका डेली इंप्रूवमेंट कैसे होगा। अच्छा, 3 चीज और यू पीपल हैव टू मेक, प्लीज राइट डाउन। 1, रजिस्टर फॉर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग वाला आप लोगों को कैसा रजिस्टर लेना है, उसमें वो लिखा रहता है ऐसे, मार्केट में अवेलेबल होगा, यूपीएससी, और ऐसी 2 लाइन होती है, ठीक है? और आई वुड से कि मतलब थोड़ा मैं ब्रेक कर देती हूँ। तो
दो मेजर रजिस्टर जो आपके बनेंगे, एक सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का बनेगा, एक बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का बनेगा, एक नॉट वेरी लाइक थिक आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का बनेगा। तो 3 to 4 आपके पेयर नोट्स के लिए नोट बनेगा और एक आपका रनिंग नोट्स के लिए रजिस्टर बनेगा। ये जो रनिंग नोट्स है ना, यही की है, ये जो रनिंग नोट्स है यही की है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ही स्मार्ट हैं आज के बच्चे, टेलीग्राम में क्लासेस ऐसे लीक भी हो जाती है मेरी, ओके, आपस में ढूंढ डांट के बच्चे से नोट्स ले लेते हैं। तो अगर नोट्स पढ़ के ही आप लोग ये एग्जाम क्रैक कर लेते, ये सब तो मार्केट में तो सारे ही टीचरों के नोट्स पड़े हुए हैं। एक चीज नहीं है गाइस, कोई एक चीज वर्क नहीं करता और सबकी सिचुएशन अलग अलग है। नो, आई एम हैप्पी, कुछ स्टूडेंट्स टेलीग्राम से पढ़े नहीं अफोर्ड कर सकते, इट्स ओके, आई डोंट हैव एनी इश्यूज, ओके। ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल, किसी और के नोट्स से आप क्या कर लोगे? बच्चे ब्लाइंडली टॉपर्स के नोट से नोट मेकिंग आंसर राइटिंग सीख रहे हैं, मुझे नहीं पता, उनको नहीं पता था कि वो टॉपर बनने वाले हैं, आज बेच रहे हैं अपने नोट्स। एथिक्स की तो आई वुड से कि ठीक है यार, ओ फाइन, आप एथिक्स कितना पढ़ा है आप लोगों ने, कितना इनवाइब है आपके नेचर में, दैट वी हैव टू सी। मुझे पता नहीं है, मैंने नोट मेकिंग करी है, इट जस्ट बिकॉज मैं अब रैंक होल्डर हो गई हूँ, आई एम सेलिंग इट, नोबडी क्वेश्चनिंग दिस। हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं इसको। भाई जिंदगी भर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने यूपीएससी निकाल लिया, अब आप टीचर बन गए, आप सडनली ज्ञान दे रहे हैं, सडनली आप बता रहे हैं कि ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, ठीक है, हेल्प भी हो सकती है, बट एक पर्सपेक्टिव ये भी तो है दैट ऑल यू पीपल प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आपके पास टाइम ही नहीं था। इट इज, अगर आज आपने एग्जाम क्रैक कर लिया तो आप सिर्फ अपनी स्किल्स शेयर कर सकते हो, आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो, आप टीचर नहीं हो, आपको नहीं पता, राइट? आप सिर्फ अपना जर्नी शेयर कर दो, वेल गुड, क्लैपिंग, पूरी दुनिया आपके लिए ताली बजाती है, बट आप सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट है आप। Anyhow, so we need to understand this, that how we are going to get into this. It will be a mixture of definitely concepts and answer writing, okay, and we would be discussing anthropology in a very dynamic manner, और हमारी जो एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसी के साथ हम इस क्लास को कवर अप करेंगे। Budari, you need to connect to the admin team for all my classroom students for my email address. Okay? Okay, ma'am. चलिए, thank you.